चलो चलो ठीक है, तो अभी टुडे वी विल डू द रिविजन ऑफ व्हाट यूनिट 3 classification of elements, that is periodic properties of elements. Okay, so today is a revision class, already we have done in the class. Okay, so now you tell me what to go about. Okay. So this we have discussed in the class. Okay, periodic table. Okay, how to memorize the name of elements in a group. Mnemonics already I have discussed in the class, so you revise it. Okay, so already we have discussed about the periodic table. There is a S block, P block, D block, and F block. This is S block. Okay, how many groups are there? Two groups, first group and second group. First group is alkali metal, second group is alkaline earth metal, right? And from group 3 to group 12, they are the D block element. And D block elements are also called transition elements. Why D block elements are called transition elements? Because it comes between S and P block. So properties resemble between S block and P block. And also the main reason for D block is called transition element is the partially filled d orbital. Means the penultimate shell is partially filled. Already I've told in the class what is penultimate shell, the second outermost shell, right? As for example, if the D configuration scandium, what is the configuration of scandium? 3d1 4s2. So 4s2 is the outermost shell and 3d is the second outermost shell. Means just before the outermost shell. So in this you can see here scandium configuration, you see 3d1 4s2. Fourth shell is incomplete, but third shell is also incomplete. And third shell incomplete in terms of d orbital. So d block elements are called transition elements because the d orbital is partially filled, means the penultimate shell is partially filled. And now it is clear what is penultimate shell. The second outermost shell is called penultimate shell. Okay. So in transition elements, group 3, group 4, group 5, group 6, group 7, group 8, group 9, group 10, group 11. Up to these groups, elements are called transition. But 12th group, that is zinc, cadmium, mercury, this 12th group is d block elements, but they are not called transition elements because d orbital is fully filled both in ground state as well as its common oxidation state. So what is the meaning of common oxidation state? Means d block are called transition element because the d orbital is partially filled either in ground state or any one of the oxidation state. So scandium is 3d1, it's already partially filled. So scandium to nickel, you can see D1, D2, D3, D5, D5, D6, D7, D10. So D8, sorry, partially filled. In copper, you can ask, ma'am, there is a D is fully filled, and you told D orbital should be partially filled. But in copper, D is fully filled. Still, it is called transition element because in its oxidation state, what is the common oxidation state of copper? Copper 2 plus. So copper configuration is 3d10 4s1. And what is the configuration of copper 2 plus? Copper 2 plus means loss of 2 electrons. So first electron lose from 4s1 and then from D. तो S से एक निकल गया and D से एक निकल गया. So what is the configuration become now? 3d9. So 3d9 means what? D is fully filled or partially filled? Partially filled. So in spite of D is fully filled, but it is called transition because in, so transition means either in ground state or any one of the oxidation state, the d orbital should be incomplete filled. But zinc always fully filled in ground state as well as in oxidation state. तो जिंक का देख सकते हो 3d10 and when it is zinc का oxidation state क्या होता है Zn2 plus.
What do you mean by Zn2 plus? The loss of s electron. 4s2 निकल गया. Still what is left? 3d10. Means zinc ground state में भी 3d10 है and oxidation state में भी 3d10 है. Means its d orbital is always fully filled. Okay, so this is the reason, in spite of d block element, zinc group, that is 12th group, that is zinc, cadmium, mercury, are not transition elements. Okay. Similarly, F block are called inner transition elements. Why? Because in this case, transition means penultimate shell, inner means inner penultimate shell. And what is inner penultimate shell? Okay, you can see any one of the configuration. Cerium, you can see. What is the configuration? 4F1, 5D1, or 5D0, we can say 6S2. So which one is the outermost shell? 6. 6 is outermost shell. उसके पहले का shell क्या है? 5th. उसके पहले का shell क्या है? 4th. So you see here, outermost shell तो incomplete है, the inner shell is incomplete, and the inner का inner shell भी also incomplete. So this is called 6 is the outermost shell, 5th orbital is penultimate shell, and 4 is inner penultimate shell, and 4 is nothing but 4f. So F block elements are called inner transition elements because F is partially filled, or we can say the inner penultimate shell is partially filled, either in ground state or any one of the common oxidation state. Okay. Now moving to the, okay, so D block start from 4th period. Okay, so 3D series, 4D series. 3D means the last electron is entering 3D orbital, so this is called 3D series, 4D series, 5D series, 6D series. F has 2 series, 4F series, 5F series. 4F series also called lanthanoid, and this is called actinoids. And actinoids are radioactive elements. Okay. S block, D block, F block. Clear? And the last, extremely right side, the P block elements. And S block, P block, both called representative element. P start from 13 group. 13, 14, 15, 16, 17, 18. And in this, the first element is boron, so boron family, carbon, so carbon family, nitrogen, so nitrogen family, oxygen, so we say oxygen family, or this group is also called, 16 group is called oxygen family, or also called chalcogen because of ore forming elements, 17 halogen because salt forming element, and the 18 group is noble gases because they are the noble and are in gaseous form. Okay. So in P block, S block, all S block metal, all are metals. Even D also metals. Even F also metals. But in P, metals, metalloids and non-metals. You can see ये जो zigzag वाला area है, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium, polonium. So ये जो orange वाला zigzag area, this is metalloids. इसके पहले वाला जो है sky blue वाला, that is metals. And these, after zigzag, this part is what? Non-metals. तो मेटल्स भी सॉलिड होते हैं, मेटलॉइड्स भी सॉलिड होते हैं, बट जो नॉन मेटल्स होता है, वेरी फ्यू एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स इन द होल पीरियोडिक टेबल. और जो नॉन मेटल्स होते हैं, दे आर एग्जिस्ट इन ऑल फॉर्म, मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. गैस बस याद कर लो, पूरे पीरियोडिक टेबल में जो लिक्विड होता है, दैट इज ओनली ब्रोमीन. गैस में नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस एंड नोबल गैस. ठीक है, लिक्विड के लिए ओनली ब्रोमीन, एंड यहाँ से एक मर्करी होता है. गैस के लिए नोबल गैस, इसके साथ में नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस. सो दीज 4 एलिमेंट्स ओनली यू हैव टू रिमेंबर इन अ गैसियस फॉर्म. Rest all non-metals are solid. Okay, moving to the next. So these are the just introduction. Again, I'm revising again. Okay. Okay, nomenclature in periodic table. You know the name of the elements. जैसे lithium है, atomic number उसका क्या है? 3, 11, sodium. तो atomic number and element का name you know, symbol also know. लेकिन अगर nomenclature but if atomic number is more than 100,
तो इस एलिमेंट्स का नाम रखना याद करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो इसके लिए एक रूल बना दिया गया है कि तुम 100 से अबव एटॉमिक नंबर एलिमेंट को ईजिली खुद नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। सो नॉमेनक्लेचर ऑफ द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर मोर देन 100, राइट। इसके लिए बस इतना याद करना कि हर नंबर को क्या लिखेंगे और उसका क्या एब्रीविएशन है। जैसे ज़ीरो, ज़ीरो इज कॉल्ड निल, abbreviation is n, first letter is the abbreviation, 0 nil n, 1 un u, 2 by b, 3 try, ओके, नील अन बाई ट्राई, 4 को क्या कहते हैं क्वाड, तो सिंबल क्यू लिखोगे, पेंट पी, 6 को क्या कहते हैं हेक्स एच, 7 इज हेप्ट नहीं होगा क्योंकि एक बार एच आ गया तो दोबारा हम एच नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे सेप्ट एस, because we have to see the symbol even also, that should be different, oct o, जैसे 9 को तुमने क्या नॉन का, नहीं नॉन नहीं कहेंगे क्योंकि नॉन का मतलब एन लगाना पड़ेगा, ऑलरेडी एन वी हैव यूज्ड, तो इट इज़ कॉल्ड इन एंड सिंबल इज ई। सिर्फ तुम्हें नेम करने के लिए नेम पता होना चाहिए एंड फॉर्मूला के सिंबल के लिए एब्रीविएशन पता होना चाहिए, ओके। सो एटॉमिक नंबर 115, हाउ विल नेम इट, 1 को क्या लिखेंगे अन, अन, 5 इज पेंट, तो अन अनपेंट और लास्ट में आई यू एम लगा देना, तो क्या नाम हो गया अन अनपेंट ईएम, अन अनपेंटियम, ओके। एंड व्हाट इज दिस सिंबल, अन का क्या हो गया यू, यू पी, okay. So 115, if it will come in the exam, what is the name of atomic number 115 and its symbol you can easily write, okay. Unpentium, UUP, okay. Moving to the next, okay. Now this is the electronic configuration of element and the periodic table, okay. What is the first group element, outermost configuration is what, ns1, 1s1 2s, this is the outermost configuration, 1s1 2s1 3s1, okay. इसका क्या हो गया, फर्स्ट ग्रुप का outermost क्या होगा 1, सेकेंड का क्या होगा 2 s2, same number of shells will be increases, p के लिए क्या होता है 2s2 and then start 2p1 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6. So what is the general configuration of s block, p block, इसका क्या होगा ns1 ns2, इसका क्या हो गया ns2 NP 1 to 6. Okay, I will show in the next slide. Okay, this is also one very important concept. Electronic configuration in periods. Period number can be identified the number of atom. Okay, if the question will come कि what is the position of this element in periodic table, तो पोजीशन का मतलब होता है कि यू हैव टू फाइंड आउट कि ये एलिमेंट किस पीरियड को बिलोंग करता है, किस ग्रुप को बिलोंग करता है, ठीक है। We will see that one also. Wait just a minute, okay. So how to define the period, period के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, the outermost shell is that period, जो भी लास्ट n का वैल्यू होगा that is the period that belong to that period. And group के लिए you have to know blocks, means electrons किस the last electron is entering in which block, अगर S में जा रहा तो S ब्लॉक हो गया, और S ब्लॉक के लिए ग्रुप कैसे डिफाइन करोगे, S पे जो भी इलेक्ट्रॉन है, 1 है तो फर्स्ट ग्रुप एंड 2 है तो सेकेंड ग्रुप, तो S के लिए दो ही ग्रुप्स होते हैं, S1 फर्स्ट ग्रुप, S2 सेकेंड ग्रुप, ओके। इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन P, दैट इज P ब्लॉक, एंड ग्रुप के लिए P का इलेक्ट्रॉन्स प्लस 12, इजिली यू कैन फाइंड आउट। S के लिए S का इलेक्ट्रॉन, P ब्लॉक के लिए ग्रुप कैसे डिफाइन करोगे, the p electrons plus 12. It is a trick, it is easy trick. For D, if the last electron enter in D, that is D block element, and D block element belongs to which group, D electrons plus S ka electrons, means n minus 1 D electrons and ns electron, दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दोगे and that belong to that group. And for F has basically there is a no periodic table, there is no space, so F has no any group, but we say all F block elements kept in third group, okay.
So now better you see one example. Is it clear? Okay. As for this, I'm just giving one example. Atomic number 35. If suppose in exam given, okay, better I can write in this board. You can see. Okay. So how to belong to group? If question will come, write the position of element which atomic number is 35. Write the position of element atomic number 35 in periodic table. Okay. So first you have to write the configuration. So if you have to find out the position of any element in periodic table, the first thing you have to write the configuration. For configuration, already I've discussed the principle in previous chapter, structure of atom. Oppo principle you have to apply, low energy to high energy. So atomic number 35, how to write it? These are two ways. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 10. Count how many electrons are there? 30. Okay. And then after which energy orbitals come? 4p. So 5. Okay. So its configuration, or in shortcut you can write in the terms of noble gas. Okay, noble gas already I have discussed. Again I am revising. Okay, I will show in the next page. Okay. Noble gas. What are the noble gas? Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Atomic number 2. And how to learn the atomic number? Helium, all of you know, 2. Then after it become +8, +8, +18, +18, +32. You have to remember this. 8, 8, 18, 18, 32. If atomic number first element you know, then you can find out the atomic number of each element, right? Only you have to learn the name of the element. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. If helium atomic number is 2, what is the atomic number of neon? +8 कर दो, क्या हो जाएगा? 10. Again +8 कर दो, 18. 2, 10, 18. अब यहाँ से 18. 2 times 8, 8 कर दिया. Now 18. 18 + 18 क्या हो गया? 36. Again 18. 54. And then 32. That is 86. So you have to learn only 2 + 8 + 8 + 18 + 18 + 32. Atomic number is what? 2, 10, 18, 36, 54, 86, right? If you know the configuration, what is the configuration of helium? 1s2. What is the configuration of this? 1s2. Instead of 1s2, we can write helium. Okay? 1s के बाद next क्या आता है? Energy orbital 2s2, 2p6. Okay, in noble gas, the outermost configuration comes ns2, np6, right? Except helium. Okay. Now 18. 18. So we can write up to neon here. So better we can write neon, and that atomic number is 10. Next orbital will be what? 3s2, 3p6. एक एक शेल बढ़ता जाएगा. इसके लिए क्या करोगे? अब इसके प्रीवियस वाला ले लो. 36 के पहले क्या था? 18. आर्गन 18. 4s2. 4s2, 4p6 आएगा, बट इसके बीच में क्या आता है? 3d. तो 3d 10 आ गया. ओके, अरेंज करके वी राइट 4s2, 4p6. ठीक है. नाउ xenon. xenon के पहले का क्या आएगा? क्रिप्टॉन. दैट इज 36. तुम्हें नहीं भी याद है तो नेक्स्ट शेल बढ़ जाओ. 5s2, 5p6. 3d के बाद क्या आ जाएगा? 4d 10. नेक्स्ट xenon, that is 54. 6s2, 6p6. 4d है तो 5d 10. But here one more orbital also enter, 4f 14, right? So this is a general configuration of outermost configuration of noble gas. So by using this noble gas, you can use here also. I'm
Coming to the next previous slide. Clear है? Okay. So how you can write in the terms of atomic number 35, you have written in this term, or you can write in terms of noble gas configuration. So what is the outermost electron? Okay, 35. What is the nearest noble gas of 35 atomic number? Helium 2. Just you count on finger. Helium, neon, argon, krypton. What is the atomic number of helium? 2. Then 10. Then 18. नहीं, हीलियम का 2 होता है, नियॉन का 10 होता है. हीलियम, नियॉन, आर्गन 18, क्रिप्टन 36. तो ये क्या है? 35 क्या है? लेस देन है 36 है. तो यानी हमें इसके जस्ट पहले वाला लेना पड़ेगा. तो क्या लेंगे? हीलियम, नियॉन, आर्गन. आर्गन 18. ओके, आर्गन तुम्हारे किस फिंगर पे आ रहा है? हीलियम, नियॉन, आर्गन थर्ड फिंगर पे आ रहा है. मीन्स इट outermost is what? 3s2 3p6. Okay, then after what it's come? 3p6 के बाद क्या आएगा? 4s2. तो instead of this अगर तुम्हें ये लिखना है, लिखो बड़ा वाला कॉन्फ़िगरेशन. सो सॉरी. और you can write this also. ठीक है? आर्गन 18, दैट इज अप टू 3s2 3p6 वी हैव रिटन. 3s2 3p6 आर्गन हो गया. इसके बाद 4s आता है. 4s के बाद 3d आता है. 3d के बाद 4p आता है. ओके, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन विच ऑर्बिटल? p ऑर्बिटल. हाँ, सो हाउ टू डिफाइन द पोजीशन? पोजीशन में क्या क्या करना है? पीरियड ओनली द हाईएस्ट शेल. व्हाट इज द हाईएस्ट शेल नंबर? 4. एंड हाईएस्ट क्या है तुम्हारा? 4. सो फॉर पीरियड यू हैव टू सी ओनली द हाईएस्ट शेल नंबर, that is 4. so period is 4. पीरियड में कुछ नहीं करना है, जो भी तुम्हारा हाईएस्ट नंबर ऑफ शेल है वो पीरियड हो गया. सो इट बिलोंग टू 4th पीरियड. ग्रुप के लिए मैंने कहा है, पी के लिए क्या करना है? पी का इलेक्ट्रॉन्स प्लस 12. व्हाट इज द पी इलेक्ट्रॉन्स? 5 प्लस 12 क्या रहा है? 17. सो इट बिलोंग्स टू 4th पीरियड एंड 17th ग्रुप. एंड ब्लॉक तो तुम्हें पता चली गया. ब्लॉक इज नथिंग. तो ब्लॉक से ही तुम ग्रुप डिफाइन कर सकते हो. पीरियड के लिए नंबर चाहिए एंड ग्रुप के लिए यू हैव टू सी कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन विच ब्लॉक. सो दैट ब्लॉक एंड ग्रुप यू कैन फाइंड आउट. ओके, बिकॉज जस्ट आई डिस्कस हाउ टू फाइंड आउट द ब्लॉक. ओके, हाउ टू फाइंड आउट द ग्रुप. रिपीट वंस. If the last electron enter S, that is S block. And for S block, what is the group number? S1, first group. And if S2, second group. If the last electron enter in P orbital, that is which block? P block. P block के लिए group कैसे करोगे? P का electrons जो भी P पे आएगा plus 12. If last electron enters in D block, D orbital, that is D block. For D block, G का electrons, that is n-1 D electrons plus S electron, ns electron. यानी D का electron plus S का electrons, n-1 D electron plus ns electron. और for F block, if last electron enter in F, that is F block. F has only one group, that is which group? Third group. I hope it is clear. Thank you. Because this is very important concept for the examination point of view even also. Okay, even so what is the position periodicity of any atomic number? Period, maximum number of n value, block, last electron field. And S के लिए 2 groups हो गया. P के लिए P electrons, T के लिए D plus S and F. Okay, write that. Okay, you revise it. One more example you can, I'm giving one more example, all of you write. Okay, this 28.
पॉज करना है इसमें।